Hello guys, this is Mac and today let's start with the fourth lecture of alternating current A to physics. तो आज की महफिल का आगाज करते हैं विल बी डूइंग एन इक्वेशन और उससे रिलेटेड वर्किंग करेंगे. Let's say we have got an equation that is V is equals to 200 sin 30 pi t. आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन पढ़ी थी दैट इज V is equals to V naught sin omega t. तो इस ये क्वेश्चन है वी हैव गॉट alternating current supply connected to a resistor of 1500 ohms and we have to find the peak voltage, we have to find the mean voltage, we have to find the RMS voltage, we have to find the supply frequency, time period, peak power, mean power, and these are all the calculations that can be asked in the examination. तो ये सारी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. we'll be doing a question of the past papers and then we will end the lecture today. सबसे पहले बात का आगाज करते हैं विद द फैक्ट के वी नीड द पीक पावर. अच्छा, मेरे ख्याल से आप एक बात को रियलाइज करेंगे कि पीक पावर बेसिकली इस केस में 200 वोल्ट्स होगी क्योंकि वट एवर इज रिटन ओवर हियर इज बेसिकली अप द पीक पावर जो कि हमारे पास मैक्सिमम पावर होती है. लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखे वो दोनों लेक्चर्स को देख के आए वरना उसको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, देन वी नीड द मीन वोल्टेज. अच्छा गाइस, मीन वोल्टेज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक बार डिस्कस की थी कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में पॉजिटिव नेगेटिव बिकम्स जीरो, सो मीन वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो. तो मीन वोल्टेज जीरो होगा क्योंकि सिंस voltage flows in both directions. Average हमेशा क्या आती है? Zero आती है. This is something that we have already discussed and that's why we don't use the word mean voltage, rather we use the word RMS voltage. अच्छा जी. Third is RMS voltage, root mean square voltage. तो root mean square voltage के लिए we had a formula of V naught over root 2 where V naught referred to the peak voltage जो हम लोगों ने अपनी इक्वेशन की मदद से पहले ही निकाल लिया था. So this 200 is basically the V naught and that is to be divided by root 2. So 200 divided by root 2, you guys will realize the answer will be 141.4. A2 में you will be writing it as 140 volts. अच्छा, well next part में you need to calculate the frequency of an alternating current supply. अच्छा जी guys, अब इस बात को realize करें कि frequency whatever is written with sign, this 30 pi in this case refers to omega, the angular frequency, और इस ओमेगा की वैल्यू जो थी that was 2 pi f. ओमेगा का फॉर्मूला था, we have got multiple formulas, इसमें से एक 2 pi f था. So if I need the frequency, pi cancels out, 30 divided by 2, the frequency will be 15 hertz. So that's what is to be done. अच्छा, similarly time period के लिए although इस part में frequency निकलवाई हुई थी, so you might just get frequency equals 1 over time period and get the value. Not wrong at all, सही है बिल्कुल. But इस बात को realize करें, since omega equals 30 pi, omega का एक और फॉर्मूला था 2 pi upon time period. तो time period will be equal to 2 pi divided by 30 pi, which will be same thing, 1 over 30, 1 over 15, sorry. And the time period, you'll end up getting the time period as 0.067 seconds. इस बात का क्या मतलब है
कि ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई एक कंप्लीट साइकिल जब करती है तो इट टेक्स अराउंड 0.067 seconds to complete one whole wave. Okay, now we need the peak power. अच्छा जी, peak power, power के we have three formulas. Power equals vi, power equals v square over r, and power is equals to I square r. तीनों important है to some extent, but आपने रियलाइज करना है कि पीक पावर जब भी निकालनी होती है वी आर टू यूज द पीक वोल्टेज एंड करंट. इस क्वेश्चन में वी आर ओनली गिवन विद रेजिस्टेंस एंड पीक वोल्टेज, सो it would make much more sense if I were to use this formula. Otherwise, if you want to use V equals IR and then get the values of current and then put it over there, it's totally up to you. But since power is equals to V square over R, directly use कर सकते हैं, and the value of peak voltage is 200 and the value of resistance in the question was 1.5 kilo ohms. So you can just directly get the peak voltage, which will be 26.7 watts. I can round it off to 27 watts. Okay जी, RMS power या mean power. अच्छा, for power we can use the word RMS and mean, same thing. तो RMS power के लिए we had one formula, that is P0 over 2, and it can be calculated from a second formula as well. It's totally up to you आप कौन सा use करना चाहते हैं. But अगर आप P is equals to V RMS square करके over R भी करेंगे, the answer would be exactly same and they're both equally right. इसमें कोई वो नहीं है. So 26.7 divided by 2 कर दूंगा RMS के लिए, since मेरी value ये आई थी, so it would be 13.3 something. And अगर मैं VRMS की वैल्यू लेता हूँ, so VRMS was 141.4. So even if I do 141.4 squared divided by 1500, जो कि मेरे पास resistance थी, you would end up getting the same answer of 13.3. तो आप दोनों फॉर्मूलास की वर्किंग से इसको निकाल सकते हैं. मैं प्रेफर करता हूं कि आप ये वाला यूज करें, बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू. इसमें कोई वो नहीं है, प्रेफरेंस तो हर इंसान की हो सकती है. ठीक है, दैट्स PRMS. मूविंग ऑन. लाओ, लास्ट चीज क्या बोलता है, सजेस्ट क्या होगा अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को डबल कर दूं टू द पीक पावर. क्या बोले सर, अगर मैं इस AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं, since omega equals 2 pi f, so if I multiply f by 2, this 30 pi would basically become 60 pi. इसको डबल करने से मेरी पीक पावर पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कि पीक पावर एक्चुअली इज बेसिकली पीक वोल्टेज ओवर स्क्वायर ओवर रेजिस्टेंस. तो मैं इसको जितना भी चेंज करूं, इट वुड नॉट इफेक्ट द पीक वोल्टेज. बेसिकली मेरी जो पीक पावर है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द पीक वोल्टेज. सो नो, इफ यू डबल द ओमेगा 30 pi को 60 pi भी कर दें, however this change will not influence the peak power because the peak power is only dependent upon the peak voltage. तो कोई इफेक्ट नहीं होगा. ऑन दैट नोट, एक और क्वेश्चन इस लेक्चर को इख्तिताम करने से पहले डिस्कस करेंगे. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ मार्च 21, पेपर 42, क्वेश्चन नंबर 10. The output potential difference of an alternating power supply is represented by V is equals to 320 sine 100 pi t, where V is the potential difference in volts and T is the time in seconds. Determine the RMS potential difference of the power supply. तो V RMS is equals to V naught over root 2. V naught is 320
So 320 divided by root 2, you would get the value that is going to be 226.3, which will be 230. Determine the period of the output. So sin omega t होता है. So V is equals to, लिख लिया करें, V naught sin omega t, जरा आसानी हो जाएगी. So 100 pi basically represents omega, so 100 pi basically represents 2 pi over time period. So time period will be 2 pi divided by 100 pi, which will be 1 over 50, which will be 0.02 seconds. All right. The power supply is connected to a resistor and a diode in the circuit shown in figure 10.1. State the name of the type of rectification produced by the diode in figure 10.1. Well, what kind of rectification is this? There's a single diode, and then this is basically half wave rectification. क्या होती है rectification? Converting alternating current to direct current. Shabash. Moving on. On figure 10.1, to sketch the variation with time t of the potential difference VR across R from t equals 0 to t equals 40 milliseconds, आउटपुट का ग्राफ बनाना है. इसके अक्रॉस VR का ग्राफ बनाना है. सो 20 milliseconds पे एक वेव इनपुट है, क्योंकि रेक्टिफाइड वेव है एंड द पीक इज 320, तो ये वेव यूं बनेगी एंड इट वुड नॉट गो डाउन, रादर यहां पे 0 होगा, देन ये यू बनेगी एंड अगेन 0 होगा. दिस इज गोइंग टू बी 3 मार्क्स. पीक वोल्टेज 320 ग्राफ की मदद से, वो इक्वेशन की मदद से, एंड देन दैट्स प्रीटी मच इट. लास्ट में क्या बोलता है, और 20 पे क्यों खत्म किया, क्योंकि उसने टाइम पीरियड हम लोगों ने 20 निकाला था. ऑन फिगर 10.1, draw the symbol for the component that may be connected to produce a smoothing effect. So for smoothing, we would be connecting what? A capacitor. We would be connecting a capacitor. और वैसे नहीं बोला, but if का ग्राफ अगर इसका ग्राफ भी आता, तो the graph would have been a little flatter. इस तरीके से ग्राफ बनता. ठीक है, just for understanding purposes. ये बोला नहीं है, ना बनाना है. But that's pretty much it. This was the second last lecture of the chapter. Last lecture mein inshallah we'll be discussing RMS values for anything other than an alternating current supply, and that would be the last lecture for alternating currents. अपना ख्याल रखिएगा. Share the lecture. Take care, guys. Thank you.